So today let us discuss or let us see how we are going to prepare. Preparation strategy क्या होनी चाहिए. तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है उसके लिए क्या क्या देखेंगे आज इज लिटिल बिट अबाउट द एग्जाम, इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम कैसी होगी, पासिंग क्राइटेरिया क्या है अगर रिटन पेपर हुआ तो, एग्जाम का सिलेबस क्या है, प्रीवियस पेपर जो हुआ था उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी देखेंगे, और आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. तो जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि यू ऑल हैव गॉन थ्रू द नोटिफिकेशन, द पोस्ट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, इट हैज 21 वेकेंसीज, पे लेवल ऑफ 12, पे मैट्रिक्स. ठीक है. आप में से कितने लोगों ने अप्लाई कर लिया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिनिश्ड योर एप्लीकेशन? यस, देवेश applied. Others in process, applied, done. Okay. Not yet, Nikhil. Fine. Okay, what about others? Azim, Atri, Ashutosh. ठीक है, in process. Fine. So the form filling date has already started from 29th December. Last date आपका है 27th of January. So another, today is what? 12th of January. So you have another 14-15 days left. Tentative examination date, they have said, would be on the 5th of April. It's a Sunday. So roughly how many days do we have in hand? Around, let's say from today, we have another 2.5 months. Okay. Now, as far as the eligibility criteria is concerned, जो एज है मैक्सिमम 30 years of age, this is for the unreserved category. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, इफ यू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लानिंग, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. बट इफ यू हैव ओनली अ बैचलर्स डिग्री, बीटेक और बी प्लान, you will require a 3 years experience. Or else, if you have a integrated planning degree, जहाँ पे आपने बी प्लान किया और इंटीग्रेटेड मास्टर्स कर लिया उसके साथ, एम प्लान कर लिया इंटीग्रेटेड, उस केस में आपको आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? So here you can have bachelor's in architecture, B plan, whatever, but postgraduate degree in planning would be required. Okay. एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम अगर देखा जाए, सो योर टोटल एग्जामिनेशन, ना अगेन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है नोटिफिकेशन में कि इफ वी रिसीव a lot of applications, in that case we will be conducting a written examination. अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस नहीं आए तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा. सो बट ऑब्वियस कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है. नाउ इन दिस केस, रिटन मार्क्स या रिटन एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 300 मार्क्स. उसके साथ इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का होगा. सो टोटल जो आपका कैलकुलेशन होगा मार्क्स का, दैट इज ऑफ 330 मार्क्स, 300 रिटन एंड 30 फॉर द इंटरव्यू. अभी जो रिटन एग्जाम है उसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं. एक ही क्वेश्चन पेपर होगा. ओके, देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन पेपर. दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, not a physical handwritten test.
It will be a computer-based test which will be of MCQ format. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है. ये जो क्वेश्चन पेपर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 is your general knowledge about the state, and part 2 is your technical या फिर subject related questions. So जो part 1 है general knowledge का, that is for 50 marks. Part 2 जो है technical, that is for 100, has 100 questions for 200 marks, and this is 50 questions for 100 marks. So total you have 150 questions, 2 marks each, and that is what makes it 300 marks. I hope this is clear. Your paper or examination is going to be for 3 hours, and you will have negative marking. So कोई भी गलत आंसर दिया उसमें 1/3 negative marking होगा. Yes, is everybody clear? Also for your interview that is there, the candidates, the number of candidates who will be called for the interview based on your score in the written exam, this will be in proportion of 1:3. So you have 21 posts. So 21 is 2 into 3, whatever that comes. Those number of candidates would be interviewed. So for every one post, there will be 3 candidates who will be interviewed. Okay. Coming to the passing criteria. Now, to be, again, this is for the written examination to be called for the interview. So for unreserved category, you need to score minimum 33% marks. 33% you need to acquire from that 300 marks. And for reserved category, you need 23%. Then you are eligible to be considered for the call for interview. Okay? So that does not mean that you get only 33% and it is a sure shot that you will be called for the interview. ऐसे नहीं होगा. ठीक है? Because competition ज़्यादा है. And like we saw, इंटरव्यू के लिए 1:3 के proportion में ही कॉल किया जाएगा. सो भले ही आपने 33% से ज्यादा मार्क्स भी मिल गए, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इन दिस रेशियो, यू विल नॉट गेट दैट कॉल फॉर द इंटरव्यू. Now coming to the exam syllabus. How many of you've gone through the syllabus? Syllabus एक बार देखा है, go through किया है? Okay, good. So अगर part 1 का देखा जाए syllabus पहले, so this is the basic general knowledge of the state where you need to know the history, contribution of Chhattisgarh in the freedom movement. Now, if you see, Chhattisgarh is a state that was formed much later after independence. Independence के time तो Chhattisgarh as a state नहीं था, right? But जो area है, उसका क्या contribution था in the freedom struggle? Along with that, the geography, climate, again, details about your mines and minerals, for what it is famous for, right? It's rich resources. The language, music, dance, all the culture, tribes, festivals, economics, agriculture, industries, like I said, resources, your mines and everything.
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो इट इज नॉट ओनली छत्तीसगढ़, इसके अलावा भी नेशनल लेवल पे भी करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। कमिंग टू द प्लानिंग सिलेबस और द सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, सो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक लिस्ट दिया है। Now this is not a detailed syllabus that they have given. What all are you expected to know, or what all are you expected to study? So they've given roughly 51 points, 51 topics. Okay. Planning history, urban economics, sociology, urban planning, disaster management, big data, data analytics. Again, this is a part of your urban informatics. Services, universal accessibility, cities in history. Again, this is something that you can relate to planning history. Planning theory, traffic, transportation, demography, planning practice, ecology. देखने में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा लग रहा है। यस, नो। यू प्लस यू हैव हाउसिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल मैनेजमेंट, environment, like planning legislation, planning ethics, climate change, disaster risk. कुछ कुछ टॉपिक्स थोड़े लेंदी लग रहे हैं, कुछ रेपिटेटिव लग रहे हैं। यस, डू ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? यस. So even when I went through it, I felt the same, that it's too lengthy and quite repetitive as well. So don't worry, we will discuss towards the end what can be done about this and how do we deal with it. But now, another quick question. Since आप लोगों ने बी प्लान किया है, एम प्लान किया है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पहले से पता है? Maybe hardly 1 2 topics or 2 3 topics would be such कि यार ये तो क्या है, ये पता नहीं। बट बहुत सारे ऐसे यार, हाँ ये कभी तो पढ़ा था 2 साल पहले, 3 साल पहले, फर्स्ट ईयर में, एक्सेट्रा। ऐसे वाले हैं टॉपिक्स? यस. ओके, ग्रेट. सो ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज. वी विल नाउ टुवर्ड्स द एंड वी विल डिस्कस कि इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है? उससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस देखते हैं. सो 2018 में वी हैड द एग्जाम फॉर एडी प्लानिंग फॉर छत्तीसगढ़. उसके बाद नाउ इन 2026, so roughly 8 years later we are having this exam now. So if you see किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे या कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस था प्रीवियस ईयर 2018 में, तो जो सारे आपके प्लानिंग के सब्जेक्ट्स है, all of them have been given similar weightage, या फिर you know questions have been asked right from, of course, your urban regional planning, planning techniques, planning legislation, planning history, housing, environmental planning, transportation. Now these all of you will agree ये आपके planning के core subjects है. Yes, no? करेक्ट. ये तो हमारे core subjects है planning के, मतलब इसके सिवा planning incomplete है. राइट? सो भले ही यहाँ पे भी अगर देखा जाए कि प्लानिंग के अलावा भी कुछ और चीजें लिखी गई है, द मेन फोकस हैज टू बी द कोर प्लानिंग सब्जेक्ट. अलोंग विद दैट, जो सिलेबस में लिखे हैं, जैसे कंजर्वेशन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेटोलॉजी, these subjects are in addition. ओके. नाउ वी विल सी कि यहाँ पे ये जो प्लानिंग लेजिस्लेशन में कह रही हूँ या प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट में कह रही हूँ, हाउ डू वी रिलेट दिस टू व्हाट इज रिटन ओवर हियर, वो हम आगे जाके देखेंगे.
ठीक है, क्योंकि प्लानिंग लेजिस्लेशन सुनने में ठीक है इतना सा आसान लग रहा है, बट उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या कवर होगा, लेट अस सी दैट. ओके, before that I would just like to announce that we are starting with a live course from 15th of January. Okay, so we will be having classes from Monday to Saturday, 8 to 9:30 p.m. And you will be able to access these classes, live classes, plus their recordings also will be accessible. The whole syllabus of part 2 will be covered. We will be focusing on part 2 in the course that we Exam Assure will be conducting. And all the faculty that is there is all alumni of IITs, SPAs, and NITs. Okay, along with that, you will also be having sectional as well as full-length mock tests, and online notes also will be provided. Preparation strategy. After preparation strategy, again, we will discuss your doubts and questions. I will take up all your questions. So, अभी preparation strategy क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो the time we have in hand. डेट हमें टेंटेटिव पता है 5th of April 2026, दैट इज गिवन. और जो सिलेबस दिया है, जो अभी हमने 51 पॉइंट्स जो देखे, अगर उसे मैं सेग्रीगेट कर लूं, the first thing is to sort them, simplify them, and segregate them. So, can I club planning history and theory, cities in history, planning theory, land economics, and location theory? Can I club all of these together? Yes. Yes. Is it making sense to all of you? प्लानिंग हिस्ट्री थ्योरी, प्लानिंग थ्योरी, सिटीज इन हिस्ट्री लगभग सेम है, सिमिलैरिटी है, आसपास वाले हैं. इसके अलावा अगर देखा जाए, पार्टिसिपेटरी एंड इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट, टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्पाशियल डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग, इकोनॉमिक्स फॉर प्लानर्स, डेमोग्राफी, अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस, advanced partial data, big data, data analytics, more or less related to some techniques, to some methodology. Yes, or some tools, let's say. Other than that, you have economics, sociology, social sciences, introduction to production of spaces. Now, this concept is by Henry Lefebvre. Okay. So, अगर मैं ये क्लोज बाय सब्जेक्ट्स या क्लोज बाय जो टॉपिक नेम्स दिए हैं सिलेबस में उसको क्लब करूं, कैन आई जस्ट head them or title them under these various headings? For example, the first four that we saw here, can I put this under planning history and theory or planning history as such? जहाँ पे right from your ancient civilizations to Vedic period, medieval, modern, medieval, Renaissance, modern period, and then your theories, right from your concentric zone model, von Thunen model, वो सारी theories मैं इसमें consider कर लूँ. Yes, so that covers my history plus all the theories. Fine. Coming to the second one here, like I said, it is all your tools, techniques, methodology. Right? Participatory development is also a technique or a tool. Correct? So अगर इसे देखा जाए, can I put this under planning techniques and management?
Coming to the third one, urban economics, sociology, social sciences under urban sociology, where again it is more about the people centric approach. Next one, all planning, right from your regional planning to urban planning to planning practices, various concepts, what are sustainable cities. So regional level, urban level, city level, all kinds of planning, whatever infrastructure might be needed for that, all of it clubbed together. Next, management, real estate development management, project appraisal, formulation, and management. Then, can I club infrastructure planning, water security and planning, and site and land development? इसके बाद you have all about governance, policy, legislation, right? So urban governance and management, institutions involved, public policy, planning, legislation, again, public policy and politics. Again, if you see, okay, like we said, बहुत लेंदी लग रहा है बट रेपिटेटिव भी है. Can I put this under various heads? Where again, right from your regional to city planning, it's all your urban regional planning. Management would be under your project management, services and infrastructure, and planning legislation. Is everybody clear? Clarity आ रही है सबको? ठीक है. Next, disaster management, climate change, disaster risk resilience, disaster mitigation, and all environment related topics. Environmental planning, science, EIA. So again, this is a mix of your basic environmental concepts plus your planning, environmental planning. So यहाँ पे अगर बेसिक एनवायरनमेंट में देखा जाए तो किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? योर बेसिक ऑफ द बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, राइट? व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज इकोटोन, जो बेसिक एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स है वो वाले भी पढ़ना जरूरी है इस केस में. ठीक है. This I'm saying based on the previous year analysis and previous year questions that I've gone through. Along with your environmental planning, basic environment concepts are important in this case. Then you have housing and formal, informal sector. Yeah, informal sector and urban poor के लिए planning. So again, that would be a part of your housing itself. So you have disaster management, environment and planning, and housing. So till now we saw 46 out of 51. We've covered 46 topics. 47 conservation. 48 is landscape. Then you have transportation planning, rural development and management, and last is universal accessibility. So इस तरह से if we simplify it, ये जो सारे 51 की लिस्ट है, that can be sorted out into 15 different subjects that we have studied or that we know. सबसे पहले काम है कि जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको सिंप्लीफाई करो. अब थोड़ा क्लैरिटी आया, थोड़ा ये वाला साइड पढ़ के थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ लग रहा है वर्सेस दिस साइड.
यस, if I compare the 51 versus these 15 topics, is this easing out your tension? Yes, no, quickly let me know. Still not? Then we will look at no, not. Okay, Ria, we still have something for you then. Don't worry. Okay. So now from 51, we've reduced it to 15. We are not skipping anything. Okay. We are just learning to manage it better. Now, what should be the strategy? Fine. इसमें से भी ये जो 15 टॉपिक्स है इसको लेट्स सेग्रीगेट इट इनटू योर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. There are a few topics which are architecture related or from the field of architecture. Most of it are from your planning background. So here, if you see, roughly around out of those 15, 12 belong to planning, right from your environment to transport to services and infrastructure, legislation, history, planning techniques. And if you see conservation, landscape, universal accessibility, we can say are more towards the architecture side. Okay. Now, what should be the approach? Considering, let's say we start from 15th. Okay. So first let us focus on your planning subjects. जो planning के subjects है पहले उस पे focus कीजिए. So you give, let's say, around 6 days for your planning history. After that, another 6 days for planning techniques and management. Or you can also, if you are very good at planning history, you can finish it off in 3 days and take 3 days from here for your planning techniques as well. Urban sociology, if you see, is a small topic. 3 days should be enough for that. Now, what do you do on Sundays? Now, this is your schedule from Monday to Saturday. On Sundays, you would be revising what you have studied in this period. Okay. So यहाँ पे जो पढ़ाई की है पूरे हफ्ते में क्या क्या गो थ्रू किया है उसको उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ and that you should be revising. Now, how do you study or what should be the approach even while studying? Let's say that for planning history, you are looking at the Vedic period, for example. ठीक है इसके बारे में पढ़ रहे हो जो भी है मेन इसके जो पॉइंट्स है you have the 8 patterns that are there. List down those 8 patterns, whatever they are. उसके जो diagrams है, figures है. If possible, just rough sketches in your short notes and the examples of it. Okay. So let's say कि दंडका पैटर्न जो है या प्रस्तारा जो पैटर्न है उसका लिविंग एग्जाम्पल if you see is Jaipur. Jaipur is based on the prastara pattern. So when I'm studying prastara, I just have to write example Jaipur. And this is what you need to be focusing on and revising these notes on these Sundays. अगर बाय चांस कुछ ऐसे हो जाए कि ठीक है मैंने डिसाइड किया था ये 3 दिन में मैं प्लानिंग हिस्ट्री सब खत्म करूंगी बट फॉर सम रीजन इसमें से 2 टॉपिक्स बच गए मेरे ठीक है रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑल आई फिनिश 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट utilize that Sunday to finish off these 2 topics also. And revision, trust me, will not take long. Why? Because आप यहाँ पे ही notes बना रहे हो
जब जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड डोंट मेक जो कॉलेज लेवल के सबमिशन वाले नोट्स होते हैं ना, पूरा वो जर्नल भर भर के देना, फुल लेंथ फुल सेंटेंस लिखना, वैसे वाले नोट्स नहीं है एक्सपेक्टेड। नोबडी इज गोइंग टू चेक योर नोट्स। व्हाई आर यू मेकिंग नोट्स? ताकि वो पॉइंट आपको याद रहे, ठीक है। तो सो लर्न टू आइडेंटिफाई कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्या सवाल आ सकता है, एंड जस्ट राइट दोज पॉइंट्स। क्योंकि इफ यू सी, एमसीक्यू एग्जाम है एक तो, ठीक है, आंसर आपको दिया होगा, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। सो डोंट इन द नोट्स कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट, keywords should be the focus of your notes, ठीक है। सो अगर देखा जाए, बाय जैन एंड वी फिनिश प्लानिंग हिस्ट्री, प्लानिंग टेक्निक्स एंड urban sociology. The next 15 days. Coming to February, focus on give urban regional planning good number of days, around 10 days, 9 to 10 days, because इसका portion थोड़ा vast है. 3 days or 2 days also for project management is enough. Okay, project appraisal management. It's a small topic. इसके बाद services and infrastructure another 4 days. अगेन सर्विसेज, आपको जो बिल्डिंग सर्विसेज है उस वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। हियर योर सिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, सिटी लेवल सर्विसेज इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। सो बिल्डिंग सर्विसेज यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन 2 days is more than enough. It's a small topic. Okay. Then coming to planning legislation, another good 1 week for planning legislation. क्योंकि इफ यू सी प्लानिंग लेजिस्लेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट फ्रॉम योर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके आपके कुछ एक्ट्स है, लेट्स से योर लैंड एक्विजिशन लारा एक्ट, ओके, प्लस लॉट मोर गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड एक्ट्स जो है, पंचायती राज के रिलेटेड जो एक्ट्स है, दैट इज ऑल्सो यू वुड बी एक्सपेक्टेड to know. So give this planning legislation, urban planning and planning techniques. इस पे सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए. Again, why I have not kept them one after the other? Because you need a breather. Because these are all heavy subjects if you see. ठीक है, कंटिन्यूअसली तीनों पढ़ते जाओगे तो पागल हो जाओगे. तो बीच में कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी जरूरी है. एंड लाइकवाइज अगेन ऑल संडेज फॉर योर रिविजन. So by the end of Feb, you have finished urban regional planning, project management, services, disaster management, planning, legislation. Okay. Then यहाँ तक Feb end तक आपके major जो है subjects, all major heavy subjects are almost done. Fine. March you keep for the lighter subjects. छोटा subject है, खत्म हो जाएगा जल्दी, जैसे कि environment, housing, transportation. ट्रांसपोर्टेशन चाहे तो एनवायरनमेंट से पहले भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. रूरल डेवलपमेंट, एंड देन कम टू योर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट, दैट इज कंजर्वेशन, लैंडस्केप एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी. सो बाय द थर्ड वीक ऑफ मार्च यू आर डन विथ योर एंटायर पोर्शन. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी आप पढ़ने वाले हो, ये आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो. यस. और इज देयर समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी रीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि ये तो कभी सुना ही नहीं है.
कोई भी सब्जेक्ट इसमें से ले लो। ठीक है, इफ यू डन बी प्लान आई वुड से ठीक है, कंजर्वेशन लैंडस्केप का आइडिया कम होगा, राइट। सिविल इंजीनियरिंग एंड बी प्लान वालों को ये तीन सब्जेक्ट्स का आइडिया कम होगा, आई विल अग्री। बट ये जो सारे हैं प्लानिंग के, ऐसे कोई भी है कि पहली बार आज नाम सुन रहे हो? यस। नो, राइट, वी हैव गॉन थ्रू इट ऑल इन योर 2 years ऑफ एम प्लान या फिर बी प्लान या फिर आर्किटेक्चर भी किया है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये हुआ है। या इट्स बीन अ वाइल, आई विल अग्री। मे बी इट मस्ट बी 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, फाइन, बट इट्स नॉट न्यू। सो फोकस यहाँ पे क्या है, जरूरत क्या है, नीड क्या है कि यू हैव टू नाउ ब्रश अप। ठीक है, जो दिमाग भूल गया है उसको बस याद दिलाना है। वही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो भूल गए हो वो याद दिलाना है। इफ आई आस्क यू द स्टोरी ऑफ सम मूवी, ठीक है, विच यू हैड वॉच्ड बचपन में या फिर 2 साल पहले, वो याद रहेगा। करेक्ट, थोड़ा इधर डिटेल में नहीं भले ही याद रहेगा, कुछ तो याद है वो मूवी का। सो सेम यहाँ पे भी, व्हाट माई पॉइंट इज कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके लिए नए नहीं है। सो यू डोंट हैव टू पैनिक एंड बी स्कैर्ड कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। नहीं, आपको क्या फोकस करना है कि हाउ डू यू अगेन एक्टिवेट योर ब्रेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, या फिर जो थोड़ा भूल गए हो उसको भी अच्छे से याद करना है। बट यू आर नॉट लर्निंग ABCD फ्रॉम स्क्रैच हियर, राइट। यस, सो बाय द third week of March we are done with everything. ओके, यहाँ पे अगेन व्हाट द स्ट्रैटेजी इज कि फेब तक सारे हैवी सब्जेक्ट्स खत्म करो, ऑल कोर प्लानिंग। सी यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। व्हाई आई एम सेइंग गुड अमाउंट, बिकॉज दिस इज नॉट न्यू टू यू। मार्च यू कैन कीप ऑल लाइट सब्जेक्ट्स। ओके, इसमें से अगर अगेन आई एम, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग कि ये टाइम टेबल जो है या ये शेड्यूल है ऐसे के ऐसे ही फॉलो करना है। मे बी यू मस्ट बी वेरी गुड इन ट्रांसपोर्टेशन और वेरी गुड इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, एंड आपको लग रहा है कि यार मेरा तो वो 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। दैट इज फाइन। सो आप उस हिसाब से आपका शेड्यूल भी ट्वीक कर सकते हो, बना सकते हो। फाइन, वट एवर योर स्ट्रेंथ्स आर, योर कंफर्टेबल विथ, दैट इज इम्पोर्टेंट, एज लॉन्ग एज पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाओ। राइट, थर्ड वीक ऑफ मार्च तक हमने सब कवर कर लिया। उसके बाद 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन प्लस योर मॉक्स। ओके, these are important. The more mocks you practice, much easier. So 5th April they are saying is your exam tentatively, but 5th April पकड़ के ही चलो अभी के लिए। पोस्टपोन हो गया तो well and good, you get more time for revision. अभी के लिए safer side, let's take 5th April. Is it clear everybody? Yes. So few things to remember. One is your revision is very very important. One. Second is mocks, very important, and completing the syllabus, कवरिंग द होल सिलेबस। ऐसे नहीं है कि यार ये आर्किटेक्चर वाला पार्ट है इसको छोड़ देती हूँ, नहीं, यहाँ के जो 2-2 मार्क्स है ना,
दिस इज व्हाट विल टेक यू टू द इंटरव्यू और नो, ट्रस्ट मी, क्योंकि प्लानिंग तो सबको आता है ना, प्लानिंग सब भी पढ़ेंगे। So revision, mocks, completion of syllabus and your notes, very, very, very important. सबसे ज़्यादा notes important. This will help you in the revision.